अष्टोत्तर शिष्य अभय चरण भक्ति स्वामी महाराज शिवपाद नंद गुरु वैष्णव वृंद की जय। इसकान विविधि संस्थापकाचार्य श्री गोपाल की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंती गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायपुर धाम की जय। गंगा माय जमुना माय की जय। श्रीमारी तुलसी देवी की जय। श्रीमारी भक्ति देवी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। Samveda Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the simple devotees. All glories to the simple devotees. All glories to the simple devotees. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnana-timirandasya Yamuna Salakaya Chakshurum Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Tangvam Langayate Gade Yakripataraham Vande Shri Guru Vinatara Parmanam Maharam Shri Chaitanyeshwaram. Hare Krishna. You know, if they turn the bass up and the treble down, you won't get that feedback. Yeah, treble less, bass more. So the reason our movement has spread all over the world is because of book distribution. हमारा जो ये संस्था का आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन पूरे विश्व में क्यों फैला है पुस्तक और ग्रंथ वितरण के कारण. When Srila Prabhupada was a householder, he met his Guru Maharaj in Radhapur. जब श्रील प्रभुपाद गृहस्थ थे तब वे अपने गुरु महाराज से राधाकुंड में मिले in Vrindavan. So during Kartik, just like our devotees, they go to Kartik. कार्तिक के समय जैसे आप सब भक्त कार्तिक के समय राधाकुंड वृंदावन जाते हैं. So Srila Prabhupada, that time he was living in Allahabad, now it's called Prayagraj. श्रील प्रभुपाद उस समय इलाहाबाद में रहते थे जिसको प्रयागराज कहते हैं. And Srila Prabhupada had a business. श्रील प्रभुपाद का व्यवसाय था. So he took time out and went to Vrindavan during Kartik, like so many devotees do, and he met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और ऐसे में उन्होंने समय निकाला और कार्तिक के समय वृंदावन में जैसे आप सब जाते हैं और अपने गुरु महाराज से वहां मिले.
So that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was speaking to Srila Prabhupada, and he described that now there is a fire in the mud. उस समय भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने गोपाल से कहा कि इस समय आग लग गई है. And the reason why he said there was a fire in the mud was because the Bagh Bazaar Gaudiya Mutt had opened, a very large marble temple. But the devotees were bickering, disputing who will get what room for office. तो उन्होंने क्यों कहा कि वहाँ पर आग लगी हुई है और मठ में भी नया मठ खुला था, लेकिन भक्त जो थे वो वहाँ पर झगड़ा कर रहे थे तो किसको रूम मिलेगा वापस. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told Srila Prabhupada that better to sell the marble in the temple and print some books. तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने गोपाल से कहा कि जो मंदिर का मार्बल है उसको बेच दो और उससे बेटर होगा कि उस मार्बल से जो कमाई होगी उससे पुस्तकों वितरण आपका वितरण करो. So Srila Prabhupada could understand that he was very fond of book publishing and book selling. इससे श्रील प्रभुपाद समझ सके कि उनके गुरु बहुत ही ज्यादा इस चीज में रुचि रखते थे कि हम ग्रंथों को छापे और वितरण करें. And at that time, he instructed Srila Prabhupada that if you ever get money, print books. ऐसे समय में उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को निर्देश दिया कि कभी भी आपको धन मिलता है तो आप धन लेकर के उससे पुस्तक छापें. Actually, Srila Prabhupada's intention was that he would become a very big businessman and he would use that money to print books. वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि वे बहुत बड़े व्यवसायी बनेंगे और व्यवसायी बनकर जो धन आप एकत्रित करेंगे उससे बहुत सारे ग्रंथों का छपाई करेंगे. And even one astrologer told him by his hand, "You're going to be a very big businessman." और एक बार एक ज्योतिषी ने उनका हाथ देख के बोला था कि तुम बहुत बड़े व्यवसायी बनोगे. So that was his plan. ऐसा उनका प्लान था. But it didn't work out like that. ऐसा नहीं हुआ. To make a long story short, his business was failing. सारांश में उनका बिजनेस जो था व्यवसाय था वो नहीं चला. And but before that, his business was doing very well. उससे पूर्व उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चला. And he had an agency of Bosch, Mr. Bosch's chemical company. So he was selling those products. उनकी एक एजेंसी थी, केमिकल एजेंसी थी, बोस केमिकल एजेंसी जो जिससे वो बेचा करते थे केमिकल्स. But Prabhupada describes that one of the partners in the company was a little envious, and he spoke badly to Bosch about Prabhupada's agency. तो गोपाल जी अपने ग्रंथों में बताते हैं कि उनका जो एक पार्टनर था वो उनसे ईर्ष्या करता था. ईर्ष्या करने की वजह से उन्होंने जाकर के गोपाल जी के एजेंट थे बोस कंपनी के, उनको जाके गोपाल जी की एजेंसी के बारे में बुरा भला बताया. So anyhow, that didn't work out. And at the same time, Srila Prabhupada had a dream. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came to him and told him to follow him. Take sannyas. तो ऐसा होते हुए व्यवसाय को चलाने के लिए उसी बीच में प्रभुपाद जी को स्वप्न आया और उसने कहा कि मेरा अनुगत्य करो और आप भी संन्यास लो. So Srila Prabhupada woke up from that dream and he thought, I have to leave my family? Oh, that's horrible. स्वप्न से प्रभुपाद उठे तो उन्होंने सोचा कि मुझे मेरा परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो बहुत ही भयानक है. But things turned out in such a way that Srila Prabhupada ultimately took sannyas, and he was involved in establishing the Back to Godhead magazine. भगवान की कृपा से तो चीजें इस तरह से हुई कि प्रभुपाद जी संन्यास ले पाए
और उन्होंने एक ग्रंथ चालू किया बैक टू गॉड एट मैक्सिम। And he was doing all the activities himself, writing the articles, buying the paper, getting it printed, and distributing the magazines in the tea stalls. और प्रभुपाद के सारे कार्य उस ग्रंथ के लिए स्वयं किया करते थे। पेपर खरीदना, आर्टिकल लिखना, उनको लेके जाना, छपाई करवाना और उनका वितरण करना, चाय की दुकानों पे जाकर करना। So someone advised him that the magazine is good, but people don't keep magazines. If you publish books, then people will keep the book. इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि जो आप ये मैगजीन लिख रहे हैं, ये तो लोग संभाल के रख देते हैं उसको, लेकिन अगर आप किताबें लिखेंगे तो लोग संभाल के रख सकते हैं। So by that time, Srila Prabhupada had left the family and was living in Vrindavan, and he was translating the Srimad Bhagavatam first canto. उस समय श्री प्रभुपाद जी अपना परिवार छोड़ करके वृंदावन आ चुके थे और वृंदावन में आने के बाद में उन्होंने वो उस समय श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद लिख रहे थे। And he had a room in Radha Damodar temple. राधा दामोदर मंदिर के अंदर उनका एक कमरा था। Actually, Srila Prabhupada lived in different places. He had a place by Keshigat, but the last place he had was Radha Damodar Mandir. ऐसे श्री प्रभुपाद वृंदावन में कई स्थानों पर रहे हैं, केशीनाथ में रहे हैं, लेकिन जो अंतिम स्थान था जो हम सब जानते हैं वो राधा दामोदर मंदिर। But because the printing that he was doing was in Delhi, he shifted to another place in Chandi Chowk area. तो लेकिन क्योंकि ग्रंथों की जो छपाई होती है वो दिल्ली में होती है, तो इसलिए प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली में शिफ्ट हो गए, चांदनी चौक। Because that time the printing was by letterpress, and they used to take one letter made out of lead and put it and make a line, then make a page, take a sample, give it to Srila Prabhupada, then he'd check it. उस समय जो प्रिंटिंग का तरीका था वो लेटर प्रेस मशीन होती है, उसमें एक अक्षर को जमाया जाता है, एक अक्षर को जमा करके शब्द बनता है, फिर लाइन बनती है, उस पैराग्राफ में पेज बनता है और इस तरह से पूरी किताब का वैसे बनता है। Now nobody's using that letterpress. आज के समय में कोई उसे यूज नहीं कर रहा है, Outdated. बहुत पुरानी हो गई, उसको तिरस्कार किया गया। But he couldn't do that from Vrindavan and go up down, so he took a place in Chippiwada. क्योंकि वो दिल्ली वृंदावन और दिल्ली के बीच में ट्रैवल करते हुए नहीं कर सकते थे यात्रा कर करके, तो इसलिए उन्होंने छिपीवाड़ा में एक स्थान लिया। Chippiwada. What does it mean, Chippiwada? Actually, Chippi is a colloquial expression, local language for chapna. Chapna. तो हम बता रहे हैं कि छिपीवाड़ा, और क्या मतलब छिपीवाड़ा का? तो छिपी जो हम जानते हैं छपाई से छिपीवाड़ा नाम पड़ा है, छापने का ग्रंथ का से छिपीवाड़ा। And wada means place. So where they do the printing, chapna, Chippiwada. इसलिए वहाँ छपाई होती है, इसका नाम छिपीवाड़ा। So Srila Prabhupada actually wrote Srimad Bhagavatam in Chippiwada. श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम छिपीवाड़ा में लिखा। That I heard from Brahmananda. Prabhupada told Brahmananda, Brahmananda told me. ये प्रभु जी को ब्रह्मानंद के द्वारा पता है, और ये प्रभुपाद ने स्वयं उनको बताया। So from Chippiwada, very special place for us, and by the mercy of Srila Prabhupada, Gopal Krishna Maharaj was able to get that place under his sky. छिपीवाड़ा इसलिए हम समझ सकते हैं बहुत ही विशेष स्थान है हम सब इस्कॉन के भक्तों के लिए, और गुरु महाराज जी ने गोपाल कृष्ण महाराज जी से हम उस स्थान को इस्कॉन के अंदर लिखा है। The devotees are there in that temple. It's actually a temple where Prabhupada was staying, and he had one room upstairs. एक्चुअल में वो स्थान एक मंदिर है और वहाँ पर एक
प्रथम मंदिर के ऊपर प्रभुपाद की संबंध हो रहे थे। So if you're ever in Delhi, you're ever in Chandichok, you can visit that holy place. अगर आप कभी दिल्ली जाने का संयोग हो तो आप अवश्य उस हमारे लिए तीन स्थल अवश्य जाएं। Srila Prabhupada gave an example once. He said that Krishna consciousness is based on purity. प्रभुपाद ने एक बार एक उदाहरण दिया और कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हमारा कृष्ण भाव है ये पवित्रता है। Books are the basis, purity is the force. जो शास्त्र हैं बुक्स हैं वो आधार हैं और जो पवित्रता है वो बल है। Srila Prabhupada was very concerned that nothing should be adulterated. प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस बारे में कि कोई भी चीज में कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए लोग Purity, because if you maintain the purity, that will have an effect. जो चाहते हैं शुद्धता रहनी चाहिए मिलावट के बिना क्योंकि जब शुद्धता रहेगी तभी उसका प्रभाव है। In Kali Yuga, there's no purity. और हम जानते हैं कलयुग के अंदर कुछ भी मिलावट के बिना नहीं है। Everything is adulterated. सब में मिलावट है शुद्धता। सब नकली चीज है। आप समझ So Prabhupada was insisting on purity, and he gave an example. He said that there was one in Chandichok, actually at the end of the Nayasarak, which is the road that goes to Chippiwada. प्रभुपाद जी का उदाहरण बताते हैं कि चांदनी चौक एक स्थान है नई सड़क जो छिपीवाड़ा की तरफ जाती है। So there's a person there that has a small corner shop, and he sells jalebis. तो वहाँ पर एक कॉर्नर पे उस नए स्थान पे वहाँ पर एक दुकान है जो छोटी सी दुकान है जो जलेबी बेचती है। So right there he cooks jalebis, and he has a sign. Anybody that can prove this is not pure ghee, deshi ghee, then I'll pay 1,000 rupees. तो उसने उस दुकान के ऊपर एक बैनर लगा रखा था लिखा था कोई भी अगर सिद्ध कर देगा कि मेरी जलेबी शुद्ध देसी घी से नहीं बनी है तो मैं उसको 1,000 रुपए इनाम दूंगा। So because people were confident this is a pure thing, he had so many customers, that jalebi wala. तो इस वजह से लोगों को विश्वास था कि वो शुद्ध देसी घी से बना रहा है उसने उसके बहुत सारे ग्राहक थे। And the devotees known him as the famous jalebi wala. So because Prabhupada, Srila Prabhupada spoke about that jalebi wala, I remember whenever we used to go to Delhi, we used to go and take the jalebi from that jalebi wala. So purity, the ability to preach is done by having some empowerment from Krishna. In the Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj mentions, without empowerment from Krishna, no one can preach. Krishna bina shakti nahi thar pravartana is the shloka. That in order to preach, you need empowerment. And empowerment comes by purity. So we develop purity in two ways. One is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. And the other is to follow the regulative principles. This will give us the purity so that we can get the Shakti from Krishna and Krishna's representative to preach Krishna consciousness.
शुद्धता पवित्रता प्राप्त होगी और उस पवित्रता से हम योग्य बनेंगे श्री कृष्ण भगवान से शक्ति बस प्राप्त करने के लिए और उसके बाद हम प्रचार कर सकते हैं। People are suffering in this world because of avidya, ignorance. इस जगत में लोग क्यों बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके पास में अविद्या है। Someone may have a degree, MA, MBA, PhD, and still be in ignorance. किसी के पास में भौतिक जगत की अलग-अलग डिग्री हो सकती है एमबीए इस तरह से, लेकिन फिर भी वो अज्ञान में हो सकता है। Knowledge means that I know I am not this body. ज्ञान का अर्थ है कि मैं जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। First thing that Krishna is instructing to Arjuna is that we are not this body. ये पहला चीज है जो कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। The whole world is suffering under this disease that I am this body. पूरा जगत इसी बीमारी से ग्रस्त है। क्या है कि मैं शरीर हूँ। The body is always changing, Krishna explains in the Bhagavad Gita. शरीर हमेशा बदलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा भगवद गीता में बता रहे हैं। Dehinosmin yatha dehe komaram yovanam jara. Always the body is changing. जैसे भगवद गीता के श्लोक में आता है देहिनोस्मिन यथा देहे, उसमें बताया कि हमेशा शरीर बदलता रहता है। But although the body is changing, the old man still remembers when he was young. जबकि हम जानते हैं कि जब हम शरीर बदलते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा था जब मैं जवान था। So that means something in the body that remains the same. इसका अर्थ क्या है? शरीर में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ ऐसी चीजें जो पहले जैसी ही है, जिसको याद है। And that is the soul, Atma. और वो क्या है? उसको हम आत्मा कहते हैं। But this 99.9% of the population has no idea. और 99.9% लोगों को जनसंख्या में इसके बारे में पता ही नहीं। Some people thinking, I'm Russian, I'm American, I'm Indian, I'm so many different upadhis. हम अपने आप को अलग-अलग उपाधियां देते हैं। मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ऐसे हमारी बातें हैं। But these are all in relationship to the body. ये सारी बातें हमारे शरीर से जुड़ी हैं। And they think that their happiness is also in relation to the body. उनको लगता है कि जो आनंद है, खुशी है, वो भी शरीर से जुड़ी हुई है। People are praying to God, give us our daily bread. They come to God and praying for bread. बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के पास आके कहते हैं कि हमें दिन की रोटी दो, तो भगवान के पास आके ये मांगते हैं। They have no idea that their happiness in this life is already fixed. उनको ये बिल्कुल भी इसका आभास नहीं है कि उनको जो खुशी आनंद मिलना है वो ऑलरेडी पहले से नियोजित है। Bhagavatam explains tasyaiva heto paryateta kovido, that an intelligent person, a philosophically inclined person, should search out that thing that's not available from Brahmaloka down to Patalaloka. That thing they should search out. भागवतम में कई श्लोक जो प्रभु ने बताया वो बताता है कि हमें अलग-अलग सबसे ऊपर लोग और नीचे लोग में जो अवेलेबल नहीं है हमें उसको सर्च करना चाहिए। And as far as sense gratification is concerned, that will automatically come. Happiness and sense gratification will automatically come, just like no one searches out unhappiness, but unhappiness comes. और जो खुशी है, जो इंद्रिय भोग के द्वारा हमें खुशी मिलती है, वो वस्तुतः अपने आप ही आती है। कैसे? जैसे हम कुछ सोचते नहीं हैं, तो अपने आप आ जाता है। इंद्रिय भोग से जो मिलता है। No one goes to the office and works hard so that they will get some trouble. But trouble comes. कोई भी अपने ऑफिस जाकर के इतनी मेहनत करता है किसी कि मुझे कोई विपत्ति आए, ऐसा कोई नहीं करता है, फिर भी आती है विपत्ति। In the same way, we think I'm working and therefore I'm getting happiness. No, but the happiness will come anyway. और इसी तरह से हम सोचते हैं हम कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस वजह से हमें सुख मिल रहा है। ऐसा नहीं है, सुख पहले से निर्धारित है आपको क्या मिलना है।
So, Prahlad Maharaj explains in Bhagavatam that one should work in such a way that one advances in his spiritual knowledge. इसलिए प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं कि हमें इस तरह से मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें. So our avidya is so great that to try to overcome the avidya, it's like crossing the ocean. हमारी जो अविद्या है वो इतनी बड़ी और विशाल है. कैसे विशाल है कि हमें ऐसा लगता है कि आपको 7 समुद्र पार करने हैं. इतनी बड़ी. To overcome this idea, I'm not the body, I'm eternal spirit soul, I'm not Gujarati, Marwadi, Sindhi, American, none of these things. It's like trying to cross the ocean. अपने आप के लिए विश्वास दिलाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ. मैं गुजराती नहीं हूँ, मारवाड़ी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. ये अपने आप को विचार इतना बड़ा है समुद्र पार करना. You can go to the ocean. If you can swim across, you can go to Dubai. आप अगर यहाँ पे किनारे पे जाओ समुद्र में जाकर के तैरना शुरू करें तो आप दुबई पहुँच सकते हैं तैर करके. So how many can swim to Dubai? Raise your hand. आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ से तैर करके दुबई जा सकते हैं? अपना हाथ खड़ा करें. Not possible. पॉसिबल नहीं. But if you have a boat, you have a good boat, then you can cross the ocean. अगर आपके पास एक अच्छी नाव हो तो आप समुद्र पार करके दुबई जा सकते हैं. So that Bhagavatam describes that boat to carry us across the ocean of avidya is spiritual knowledge. भागवत बताती है कि वही नाव जो समुद्र को पार करने में हमारी मदद करेगी वो है आध्यात्मिक ज्ञान. And if you have a boat, you want to go to Dubai, you have a good boat, right? Still, how you know the way to Dubai? अब मान लेते हैं आपको दुबई जाना है, आपको बहुत अच्छी बोट नाव भी है, लेकिन आपको मालूम तो पता ही नहीं दुबई कैसे जाना है, तो कैसे जाएंगे दुबई? So you need a captain. इसलिए आपको एक कैप्टन की जरूरत है जिसको मार्ग पता हो जाने के लिए. Just like Krishna says in the Bhagavad Gita, the Tattva Darshana, someone who's already seen, he can take you to Dubai, the captain of the ship. भगवान कृष्ण भगवद गीता बताते हैं तत्वदर्शी जिसने उस चीज को देखा है, उस स्थान को देखा है, वही आपको वहां ले जा सकता है. जैसे नाव में कैप्टन जो होता है वो आपको वहां तक ले जा सकता है. And you have a boat, you have a captain, but you need a good wind to catch the sails to take you across. आपका नाव भी है, कप्तान भी है, लेकिन आपको आपके फेवरेबल वायु चाहिए, हवा चाहिए ताकि आपको नाव को आगे लेके जा सके, बढ़ा सके. So that favorable wind is the instructions of the Guru. वो जो फेवरेबल विंड है, हवा है, वो क्या है? वो गुरु के निर्देश हैं. If you have transcendental knowledge given to you through the parampara system and you accept that knowledge, then you can cross over the ocean of ignorance. तो हम क्या सोचते हैं अविद्या का जो समुद्र है इसको पार करने के लिए आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान की नौका होनी चाहिए, साथ में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ होना चाहिए उसको, और आप उस मार्ग के द्वारा फेवरेबल के साथ में समुद्र को पार कर सकते हैं. So even though this avidya, ignorance of this world is so vast, it's like an ocean, but if you have transcendental knowledge given to you by the spiritual master and you follow those instructions, then you can cross over that ocean of ignorance just like stepping over the hoofprint of a calf. वैसे हम देखा अविद्या क्या है, बहुत बड़े समुद्र के प्रकार है, लेकिन अगर आपके पास में आध्यात्मिक ज्ञान है, एक प्रमाणित गुरु के द्वारा प्राप्त है और उनके आप निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो वही समुद्र को लांघना, पार करना कैसा हो जाता है? जैसे बछड़ा होता है, बछड़े का खुर होता है, उसके ऊपर से आप लांघ सकते हैं आसानी से, बच्चा भी बच सकता है. Vatsapadam, the footprint of the calf. It collects water and you can easily cross over, no difficulty. So crossing over this material existence
The ignorance, avidya, is just like crossing over the water contained in the hoofprint of a calf by following the instructions of a pure devotee. तो वत्स पदम यानी कि बछड़े का फूल, उसको पार करना, उसमें जल भरना है, लेकिन उसको पार करना बहुत आसान है। लेकिन कब हो सकता है जब आप स्पिरिचुअल मास्टर के गुरु जो है उनका निर्देशों का पालन करते हैं। But people are so unfortunate in Kali Yuga, very unfortunate. लेकिन इस कलयुग के अंदर लोग बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। Pain ashayu shabdya means that they are very short-lived in Kali Yuga. एक तो उनकी आयु बहुत ही कम है And they're very slow to spiritual life. और वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत धीरे-धीरे प्रगति करते हैं। Manda, very slow. They're not much interested in spiritual life. बहुत धीरे-धीरे करते हैं। You go to anyone and you say, "My dear sir, please chant Hare Krishna." What he'll say? "No, I don't have time. I don't have time." आप किसी के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं, "ये प्रभु जी, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए।" वो क्या कहते हैं? नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं। They're manda, unfortunate. मंद, दुर्भाग्यशाली। And sumanda, let's say they have some interest in spiritual life. But even though they have some interest, there are so many cheaters that will say this is spiritual life or this is spiritual life. And that way they're misdirected. कुछ है उनके पास थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है, लेकिन कलयुग होने की वजह से उनको मार्ग में बहुत सारे धोखेबाज भी मिलते हैं जो कहते हैं कि ये आध्यात्मिक रास्ता इसके आगे उसके आगे और गलत रास्ते में चले जाते हैं। Manda sumanda mateo mandabhagya means that they're always disturbed, always disturbed. आगे आप बताते हैं तीसरा गुण की बहुत ही मानसिक तौर पर बहुत परेशान है। Nobody's peaceful. Nobody has shanti. Huh? And at home they're fighting. They're fighting in office. They're fighting in the bus, come home. All fighting. कहीं शांति नहीं है, हर जगह लड़ाई झगड़ा है। घर पे भी यही होता है, ऑफिस जाते ही होता है, मार्ग में आते हैं, बस में ट्रेन में भी यही होता है। Even if you take a rickshaw, you have to fight with the rickshaw wala. How much is the fare?Eki nahi? अगर आप रिक्शा भी लेते हैं तो रिक्शे वाले से झगड़ा करना पड़ता है कि जो उसमें भाड़ा है सही है गलत है उसके ऊपर भी, तो वो मुझे सही है कि नहीं है। You're watching TV and the daughter wants to watch this, the son wants to watch that, the wife wants to watch something. बहुत हालागुला होता है। आप टीवी देखते हैं उसमें भी क्या होता है, बेटा कुछ देखना चाहता है, बेटी कुछ देखना चाहती है, पत्नी कुछ देखना चाहती है, और सब जगह यही गाड़ी है। है कि नहीं? है कि नहीं? So the question is, how do we get shanti in this world? Shanti. प्रश्न है शांति कैसे मिलेगी इस जगत में? The only way is by the chanting of the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. When you turn off the TV and the whole family chants Hare Krishna, then you can have shanti. शांति प्राप्त करने का मार्ग क्या है? जब आप पूरा परिवार टीवी बंद कर ले और साथ में मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे तब शांति प्राप्त होगी। बहुत शांति मिलेगी। बहुत शांति मिलेगा। And there's no any other way. और कोई मार्ग नहीं है शांति प्राप्त करने का। You go to the restaurant, go to the bar, wherever you go, but you won't get shanti. आप रेस्टोरेंट में जाइए, मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। If you want shanti, you have to surrender to Krishna. अगर आपको शांति चाहिए तो आपको भगवान कृष्ण को समर्पण करना होगा। And in Kali Yuga, surrender to Krishna means Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva 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 khatir anyatha. और इस कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण को समर्पण करने का क्या अर्थ है? प्रभु महाराज को इस श्लोक में बताया कि हरे नाम एक केवलम, कलो नास्ति नास्ति, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। So, Srila Prabhupada, he left Vrindavan and went to America,
to help people become Krishna conscious. इसलिए श्री प्रभुपाद जी वृंदावन को त्याग करके अमेरिका गए। अमेरिका कैसे गए? वहाँ पर लोगों को कृष्ण भावनाभावित बनाने के लिए। And what did he bring with him to America? He brought his books. और जब अमेरिका गए तो अपने साथ क्या लेकर आए? वो अपनी पुस्तकें ग्रंथ लेकर आए साथ। So this whole Krishna consciousness movement is based on books. ये पूरा कृष्ण भावनात्मक आंदोलन जो है ये शास्त्रों पर आधारित है। Therefore, Srila Prabhupada said that personally I have no qualification, he said. But I had faith in the words of my Guru Maharaj to distribute books. इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि मेरे अंदर अब स्वयं से कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु के वाणी पर कि मैं अगर ग्रंथ वितरण करूंगा तो इसी से आपका प्रभाव होगा। So now Srila Prabhupada gave us that instruction. You print books in as many languages as possible and you distribute them, and the Krishna consciousness movement will spread all over the world. अब हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने हमें निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया है कि आप जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं उन सब में ग्रंथों को छपाइए और छाप करके उनका वितरण कीजिए। इसी तरह से जो कृष्ण भावना का आंदोलन है वो बढ़ेगा। So wherever there is Krishna and wherever there's Arjuna, Sanjay says there will be victory. भगवद गीता में संजय क्या बताते हैं, जहाँ भी कृष्ण होंगे और अर्जुन हनुमान क्या होगा, आप विजय अवश्य होगी। In the same way, this Krishna consciousness, whatever you see, Juhu temple, and now there's the Chopati temple, and now there'll be a new temple in Kargar. Right? It all came about by distributing Srila Prabhupada's books. हमारा मंदिर है, चौपाटी में है, जुहू में है, सागर में आ रहे हैं, ये सब जो बन रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, किससे फैल रहा है? ग्रंथ वितरण के माध्यम से। So this instruction is passed on to us from Srila Prabhupada that you distribute books, distribute books, distribute books. ये निर्देश श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है कि आप ग्रंथ वितरण कीजिए, ग्रंथ वितरण कीजिए। And whoever we distribute the books to, they will be benefited. हम जिसको ये ग्रंथ देंगे, उसको बहुत लाभ मिलेगा। If they take a book, then and they read the book, their life will be changed. अगर वो ग्रंथ लेंगे और उसको पढ़ेंगे, तो उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। Srila Prabhupada explained that even by touching the book, their life will be changed. प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी ने इसको ग्रंथ को टच भी किया, छुआ भी, तो भी उसका जीवन में परिवर्तन होगा। So this is the process. We should distribute Srila Prabhupada's books, read Srila Prabhupada's books, and then certainly we'll cross over this ocean of avidya. ये तरीका है, मार्ग है, इस तरह से हम अविद्या के इस समुद्र को पार कर सकते हैं। Actually, हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को वितरण करना और पढ़ना भी। Actually, all of the problems in the world are from this ignorance that I am this body. इस जगत में जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो किस लिए हैं? क्योंकि हम ये इस अविद्या में जी रहे हैं कि हमें शरीर है। We have to break out of this avidya, ignorance. हमें इस अविद्या से बाहर निकलना है। And that's possible. So we need a strong process. और उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ही शक्तिशाली तरीका चाहिए। We need Krishna to help us. हमें श्री कृष्ण भगवान की सहायता की आवश्यकता है। And Krishna explains in Bhagavad Gita that no one is more dear to me than one who spreads this transcendental knowledge. और श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को सबको बताता है, वो मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति है। So if you want to be empowered by Krishna, if you want to become dear to Krishna, then distribute Bhagavad Gita, the instructions of Krishna. अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान के प्रिय बने, आपको भगवान की शक्ति प्राप्त हो, तो उसके लिए आप इन ग्रंथों को भगवद गीता को वितरण कीजिए। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Are there any questions? किसी और प्रश्न है, जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु। ये तो बांग्लादेश में
मंकी जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं और इस स्पॉट को जेल में बंद कर रहे हैं, उसके लिए कैसे भी बंद होना चाहिए। ये मेरी इसे भी बंद हो रहे, ये इच्छा है। I know what you're saying. happening in Bangladesh Yeah, right now. yeah. So we want to see how it can be closed. Stop. You distribute Bhagavad Gita. तो उसके लिए आप भगवत गीता का वितरण करें। Don't be in ignorance like them. That's all right. Whenever you preach, the demons become upset. जब भी आप प्रचार करते हैं तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो परेशान होते हैं। What was Prahlad's fault? प्रहलाद महाराज के पिताजी क्या थे? His father was so angry. वो गुस्सा हुए थे जब प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे थे। He wanted to kill him. वो उनको मारना चाहते थे। Why? क्यों? Because he was Bhagavan ka bhakt. क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। So whenever there's preaching, there'll always be some, antagonistic element. जब भी आप प्रचार करना चाहेंगे भगवान का, तब ऐसे कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व होंगे, विरुद्ध तत्व होंगे जो कि उसको रोकना चाहेंगे। So that's the situation. ये स्थिति है। Many people are joining ISKCON in that Bangladesh. बांग्लादेश में काफी लोग इस्कॉन से जुड़ रहे थे। So other people are becoming afraid. बाकी लोग भयभीत हो गए इस चीज से। But that's only due to avidya. लेकिन ऐसा क्यों है? सिर्फ अविद्या के कारण कि हम अपने आप को सही समझते हैं। In this life, I may be born one religion, next life, and I'm fighting some other religion. But I can be born in that religion in my next life. Is it not? तो आज आप एक धर्म के अंदर हैं, आपका जन्म एक धर्म में हुआ है, लेकिन अगर आप जब आप शरीर बदलेंगे दूसरा जन्म होगा आपका, हो सकता है आप उसी धर्म में चले जाएं। तो ये अविद्या है। Just like in Israel, they're fighting with the Palestinians. जैसे हम इजराइल में देखते हैं, इजराइल के लोग फिलिस्तीन के लोग से झगड़ा लड़ रहे हैं। But who's to say that the Israelis were not Palestinians in their last life, and the Palestinians are not Israelis in their next life, and now they're fighting? ये कौन कह सकता है कि जो अभी इजराइली हैं पिछले जन्म में फिलिस्तीनी नहीं थे और जो फिलिस्तीनी अभी हैं वो पिछले जन्म में इजराइली नहीं थे? Avidya. So they need spiritual knowledge, and that's from Bhagavad Gita. उन सबको अविद्या को दूर करने के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। वो कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता के ज्ञान से। And the material world is always a dangerous place. और ये जो भौतिक जगत है हमेशा एक बहुत ही भयावह स्थान है। So the best thing to do when you're in danger is to chant the holy name of the Lord. जब भी सबसे अच्छी चीज है, जब भी आप भय में हो तो सबसे अच्छी चीज है आप भगवान का नाम का उच्चारण करें। Chanting Hare Krishna is also a very powerful prayer. भगवान का नाम का उच्चारण, हरे कृष्ण नाम का उच्चारण बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। So if you want to do something for the situation there, then chant more. अगर आप वाकई में उनके लिए बहुत परेशान और चाहते हैं उनकी मदद करना, सहयोग करना, तो बहुत ही सावधानी के साथ भगवान का नाम जप करें, उनके लिए प्रार्थना करें भगवान से। If you're chanting one round, then chant 2 rounds. One for Bangladesh. अगर आप प्रतिदिन एक हरि नाम जप करते हैं तो 2 कीजिए, एक अपने लिए जो कर रहे हैं और एक बांग्लादेश में जो है उससे भी लोग भगवान के द्वारा करना। No one is more powerful than Krishna. भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। And Krishna says, "Time I am." भगवान स्वयं कहते हैं मैं समय हूँ। Sometimes things are favorable and sometimes they're not favorable. और समय कभी आपके पक्ष में होता है, कभी आपके विपक्ष में होता है। But the devotee never gives up his duty to Krishna. और भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। And that is to always think of Krishna. और भगवान को
साइकिल करते हैं। So certainly it's not a very good time, but in order to help more, we should pray to Krishna. वास्तविकता में ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। There are so many demoniac influences involved. बहुत ही आसुरी जो शक्तियां हैं वो उसमें इन्वॉल्व है। Any other question? और कोई प्रश्न? किसी का और प्रश्न कोई जिज्ञासा? माता जी में से कोई? थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर आपने बताया। मेरा प्रश्न ये है कि आज के जमाने में टुडेज वर्ल्ड what is happening is many people are reading the Bhagavatam and Bhagavad Gita on computer or laptop or mobile. So how to promote our books? In spite of people are reading on mobiles, what we should tell them? Now we have the books on mobile. Can I speak in Hindi? Yeah. हरे कृष्णा। प्रभु जी का प्रश्न है कि आज के समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं मोबाइल के अंदर भगवद गीता भागवत पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने ग्रंथों का वितरण कैसे चला सकते हैं? This is called the Transcend app. All the books are on the mobile. All 80 books, okay? In Hindi, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu, Nepali. Okay? So you can hear the books or you can read the books. Both are there. You can read, you can hear. You want to hear and read at the same time? You can do that also. You can read and you can hear at the same time. तो बता रहे हैं हमारे बीबीटी का बुक है, एप्लीकेशन है ट्रांसेंड, आपको प्ले स्टोर में मिलेगा वो। तो उसके अंदर 80 से भी अधिक ग्रंथ हैं हमारे अलग-अलग भाषाओं में, और उन भाषाओं के साथ में उनका ऑडियो भी है और बुक्स भी हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो सुनना चाहें तो सिर्फ सुन सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ते सुनना चाहें, सारी ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। तो आप उस मार्ग का चयन कर सकते हैं। So people are getting ready for work. They're busy getting themselves ready, but they can same time hear Bhagavatam, Bhagavad Gita, Nectar Devotion, Krishna book. They come back from work, they're tired, difficult to read, but they can hear. Put on the Transcend app and listen. You can listen to the whole Bhagavatam in one year, every day. You listen for 1 hour. You can hear the whole Bhagavatam. So it's a very good program. It's at www.transcendstore.com. You can get the Transcend app. हम अधिकांश सुबह ऑफिस जाने के तैयार हो होते हैं, आका दौड़ में समय नहीं हो सकता, शाम को आ रहे होते रास्ते में थक जाते हैं, तब भी पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन आप इसका ऑडियो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आप सुबह शाम भागवतम श्रवण कर सकते हैं, और भागवतम को अगर आप डेली श्रवण करेंगे 1 घंटा, तो लगभग 1 वर्ष में आप पूर्ण भागवत को सुन सकते हैं। And there's also another feature. It's called artificial intelligence. You've heard of that, AI, artificial intelligence. So you just tap and ask a question. What is the process of devotional service? And according to Srila Prabhupada's books, the artificial intelligence will give you the answer. और इस ट्रांसेंड ऐप में बहुत सुंदर आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, उसका भी प्रयोग किया गया है। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप उस पर क्लिक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि भक्ति के क्या विभिन्न मार्ग हैं, तो वो प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से आपको उसका सही उत्तर बताएगा। It will explain the whole thing and with reference. That feature is also there. तो आपको पूर्ण तरीके से बताएगा एक-एक स्थिति, और उसके साथ में ग्रंथों का आधार भी बताएगा कहाँ पे ऐसा। This is made by the BBT, published by the BBT, maintained by the BBT. और ये
बीबीटी जो हमारा भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट है, उसने इसको बनाया है, वो इसको मेंटेन कर रहा है, वो इसको अपडेट कर रहा है। तो आप इसको अवश्य अपने फोन में डाउनलोड करें और इसको सब्सक्राइब करें। The question is how to sell physical books in this virtual world of like mobile apps. That's going on. So many people are selling Bhagavad Gita on Amazon. आज के समय में भी लेकिन Amazon पर भी लोग भगवत गीता बेच रहे हैं, तो चल रहा है, दोनों संघर्ष कर रहे हैं। It's happening. So many different ways the books are going out through school programs. It's that school contest, and people are donating books for villages, hospitals. So many ways book distribution is going on. और विभिन्न तरीके हैं इस जगत में इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ में भी ग्रंथों का वितरण करने के लिए आप स्कूल के अंदर अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करके कर सकते हैं। गांव में, अस्पतालों में डोनेशंस क्रिएट करके यहाँ से वहाँ वितरण कर सकते हैं। Devotees are taking donations, and the books they will distribute at the Kumbh Mela in Prayagraj. तो अभी आप जैसे उदाहरण के लिए आप दान एकत्रित कर रहे हैं और उससे जो ग्रंथ होंगे वो सब ग्रंथों को ले जाकर के प्रयाग में कुंभ मेला में वितरण किया जाएगा। In ISKCON Chopati, they had a quota of 150,000 Bhagavad Gitas. ISKCON चौपाटी में वो साल 1,50,000 भगवद गीता ग्रंथों का वितरण करता है। And this marathon, the distribution is dedicated to His Holiness Gopal Krishna Maharaj. और इस बार इस वर्ष जो ग्रंथ वितरण का वर्ष है, यह श्री गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज को समर्पित है। So, His Holiness Radhanath Swami explained to the congregation in Chopati that Gopal Krishna Maharaj is such a great devotee that whatever our quota is, we should double it in his memory. तो इन्होंने राधानाथ महाराज ने अपने वहाँ कॉन्ग्रेगेशन को अभी रिसेंटली बताया था ऐसा कि गोपाल कृष्ण महाराज के भावना को अर्पित करके समर्पण करते हुए जितना भी हम अभी तक ग्रंथों का वितरण करते थे, इस बार हम सब दुगना करेंगे। So the devotees asked me, how will we do 3 lakhs? From 1.5 to 3 lakhs, how will we do it? तो पिछले साल का 1.5 लाख था, तो एक भक्त ने आके प्रभु जी से पूछा कि हम 3 लाख कैसे करेंगे ग्रंथ वितरण। So I told the devotees, when you get an instruction, along with the instruction comes the empowerment to complete that. प्रभु जी ने भक्त को बताया कि जब आपको एक निर्देश मिलता है, तो निर्देश के साथ भगवान और गुरु परंपरा के माध्यम से शक्ति भी प्राप्त होती है। So just like the non-devotees, they're thinking in new ways for sense gratification, we should also apply our intelligence to find out new ways to distribute Srila Prabhupada's books. जैसे जो अभक्त हैं, वो नए-नए तरीके ढूंढते हैं कैसे ये बुक में। उसी तरह से हमें भी नए-नए तरीके अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए नए-नए तरीके ढूंढने चाहिए कि कैसे ग्रंथों का वितरण प्राप्त। Prabhupada clearly said that even if you can't think of Krishna at the time of your death, if you do something to push forward Lord Chaitanya's Sankirtan movement, like distributing books, then at the time of your death, Lord Chaitanya will force himself into your mind, and in that way, he'll take you back home, back to Godhead. तो प्रभुपाद स्वयं बताते हैं कि अगर मृत्यु के समय आप भूल रहे हैं भगवान का नाम आपको याद नहीं आता, लेकिन आपने कभी भी इस कृष्ण भावनात्मक आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ भी सहयोग किया, जैसे ग्रंथ वितरण, तो मृत्यु के समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु आपके मस्तिष्क में प्रवेश करके आपको याद दिलाएंगे भगवान का। ऐसा श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया। Hare Krishna. Hare Krishna. मेरा प्रश्न ये है जो जैसे संडे हम लोग मंदिर आते हैं, तो संडे और मंडे ट्यूसडे को
अपने आप को चार्ज पाते हैं मंदिर आने के बाद। बट वेडनेसडे से फ्राइडे सैटरडे तक ऐसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब माया का इतना कृपा हो जाता है, जो माया वो भक्ति को ढक देती है और पूरा माइंड को फ्रस्ट्रेट करके रखती है। तो मंदिर में आना वेडनेसडे भी आना चाहिए मंदिर को। नहीं प्रभु, जैसे कोई बहुत सारे अपने मर्जी होते हैं या फिर जनता बहुत सारे रिश्तेदारी होते हैं, नहीं आ पाते, बट संडे बस आते हैं, सैटरडे भी आते हैं या संडे आते हैं। तो ये मंडे टू फ्राइडे माया का तो कम है, इसके लिए क्या है? माया बहुत शक्ति है, वो है क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। जैसे भगवान महान है, माया भी महान है, लेकिन भगवान और भगवान का नाम कोई अंत नहीं है। माया के लिए बहुत पावरफुल वेपन है, ये वेपन भगवान का नाम है। तो माया पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है माया, लेकिन इतना शक्ति नहीं है तो भगवान के नाम और शक्ति है। भगवान का नाम सबसे शक्ति है। तो हमेशा अगर भगवान का नाम लेना, हम लोग कुकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, रास्ते में बिजनेस के लिए करते हैं, लेकिन साथ में भगवान नाम ले सकते हैं, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर हमेशा भगवान का नाम लेना है तो माया की शक्ति कुछ भी नहीं टच कर सकता है। जैसा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब भी ठंड के समय, बॉम्बे ज़्यादा ठंड नहीं लगते हैं, लेकिन ठंड के समय अगर आँख के पास जाते हैं तो ठंडे से कोई बाहर नहीं है, कोई फील नहीं है, क्योंकि आँख के पास है। इस तरफ से अगर हमेशा भगवान के पास रहेगा तो माया को फिर और माया को कुछ भी नहीं है। माया भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग, हमारा कर्तव्य है भगवान के पास हमेशा होना चाहिए। और इस कलयुग में कैसा भगवान के पास रह सकते हैं? उसका नाम से सबसे बड़ा है। तो इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेना, मंडे भी हो, वेडनेसडे भी हो, कुछ भी हो, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसका भजन में बताते हैं, नाम बिना किछि के आड़ा छोड़ भुवन नामे, नाम बिना किछि नाही को आड़ा छोड़ भुवन माजे। ये क्या मतलब? ब्रह्मलोक से, पाताललोक से, इस भौतिक संसार के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, भगवान का नाम। लेकिन हमारा श्रद्धा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बताते हैं पैसा सबसे बड़ा है, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है। देखो, बहुत लोग बहुत पैसे के पास है लेकिन शांति नहीं है। उसका प्रॉब्लम्स पैसा बहुत, उसका तकलीफ भी बहुत। गवर्नमेंट के पीछे उसका पैसा, वो चिंता है गवर्नमेंट मेरा पैसा नहीं लेना, वो इसके नीचे रखते हैं पैसा। हाँ, तो सबसे बड़ा नाम है, नाम लेना हमेशा। अगर नाम का श्रद्धा, आपका श्रद्धा इस नाम में, तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अगर कोई दूसरी चीज में डालेगा वो चिंता रहेगा, चिंता जाना दो, आपका चॉइस है। जहां आपका श्रद्धा डालेगा आपका चॉइस है। You can bring a horse to water, but you can't make him drink. You can put your faith wherever you like. And Shastra says, put your faith in the holy name.
and you'll be happy. आप श्रद्धालु कहीं पर भी आपको भगवान ने स्वतंत्रता दिया, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे एक कहावत है, आप घोड़े को जल तक ले जा सकते हैं, लेकिन जल पीना नहीं पीना वो घोड़े की चीज़ है। तो ऐसे ही आप इस जगत में बताया गया भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो निकाल लोग भीमा प्रभु का आदर प्रकट करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे जोर से। उन्होंने हमें सुंदर वो उपदेश किया कि हरिनाम पे श्रद्धा रखो और कोई भी चीज में श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से उसका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। सूचना है, जाइए नहीं बैठिए और सुनिए। आज का जो सेंट्रल ऑफिस का स्पॉन्सरशिप है जीरा देवी गुप्ता जी इनके द्वारा है और देव मानिक और रंजित माझी इनके तरफ से है। तो सक्षम गुप्ता जी है, आइए यहाँ पे आइए। सक्षम जी आइए। ये जीरा भाई गुप्ता जी के पोते हैं। तो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कागजात चालू हुआ है, पुस्तक के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए मुझे मिल सकते हैं और आपको कैसे पुस्तक वितरण करना है उसका भी हम लोग इंफॉर्मेशन दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ से माताएं पढ़ी जाएगी शांति से और बाद में प्रभु जी जाएंगे। प्रभु जी एक जगह पे बैठेंगे जहाँ पे कीर्तन चालू रहेगा। भीमा प्रभु जी का पूर्वाधान होने वाला है यहाँ पे नीचे। आप सबसे है भगवद गीता के उपन्यास में भीमा प्रभु का पूर्वाधान करना है मंदिर के साथ सभी महाप्रधान से सबके लिए। हरे धीरे धीरे यहाँ से जाइए, आप सभी लोग यहाँ से जाइए और भीमा प्रभु का पूर्वाधान होने वाला है भगवद गीता के द्वारा। तो देखिए और फिर प्रसाद के आइए। माता जी भी जा सकते हैं। फिर माता जी को देखना है प्रभु जी की जाके पूर्वाधान ले सकते हैं। इनको प्रसाद के लाइन में जाना इधर से Hello,